एक पूरी कंप्लीट प्ले लिस्ट है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्ले लिस्ट को वॉच करें। इसमें डैक्स हर एक हमने पूरे टॉपिक्स कवर करके जिससे आपको बेनिफिट हो। सो बात करते हैं आगे। जो हमारा आज का टॉपिक वो है एग्रीगेट फंक्शंस क्या हैं। एग्रीगेट फंक्शंस कैलकुलेट एंड स्केलर वैल्यू सच एज ए काउंट, सम, एवरेज एंड मीन एंड मैक्स। सो क्या हुआ, जैसे सपोज करो मेरे पास स्केलर वैल्यू क्या होता है कि मेरे पास एक मल्टीपल रोज का एक सेट है, उसको मैंने एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ कॉल्ड स्केलर वैल्यू। सो हम उसको सर्च करते हैं कैलकुलेशन बेस्ड पे। सो जो भी रिजल्ट होगा हमारा एक सिंगल सेल के लिए होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्केलर वैल्यू। सो इसमें जो फंक्शंस हम कवर करेंगे, ये सारे फंक्शन कवर करेंगे ऑलमोस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा। सो डेटा प्रोस्पेक्ट से हमारे पास ये देखिए डेटा है, सिंपल फाइनेंशियल टेबल है। सो इसको हम मैक्स क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आएंगे हम यहाँ पे मॉडल टैब में, न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर मल्टीपल अगर टेबल्स हो तो चलो वन पॉइंट के लिए तो ठीक है, बट अगर मल्टीपल होते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए टफ होता है। सो ऑलवेज रिक्वेस्ट कि आप ऑलवेज फॉलो करो टैक्स के लिए। सो लेट्स डू इट मेजर। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सम की। टोटल सेल्स के लिए हमें टोटल सेल्स तो सम फंक्शन है, एंड टाइप सेल्स को टोटल करने के लिए सिंपल सा फंक्शन हो गया सम का, टोटल सेल्स। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल सैंपल की बात करते हैं। सो इसमें मुझे जो सम है उसको और भी कस्टमाइज कर सकते, बट एवरेज पहले फंक्शन देख लेते हैं। एवरेज वाला सम के बाद आता है सम एक्स। सो टोटल सम एक्स, here we pass the financial table, then we pass the sales। so इससे क्या होगा कि हमारे पास जो सेल्स होगा वो टोटल कैटेगरी वाइज आ जाएगा हमारे पास, और हम इजीली उसको कैचअप कर सकते हैं। देन भी हमारे पास हो गया सम एक्स के बाद आ गया एवरेज एक्स, एवरेज टैक्स। सो एवरेज फंक्शन भी है use cells and then we use the average। then we have the average a function, average a function, a dax। इसमें क्या होता है एवरेज ए में कि इसमें न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू भी काउंट किया जा सकता है। तो मेक श्योर लाइक ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स को 1 और 0 कंसीडर करता है, तो उसको भी एवरेज करेगा। सो मेक श्योर जब भी आप यूज करिए इसको तो डेटा के अकॉर्डिंग कर लीजिए। सो ब्लैंक भी चेक करो, फॉलो करो इसको पोर्टल को, उस अकॉर्डिंग आप फॉलो करो काउंट। एवरेज ए, एंड देन हमें यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट एवरेज एक्स, एवरेज एक्स डैक्स, सेम एवरेज एक्स फाइनेंशियल, एंड देन वी हैव एवरेज। You can use the average or maybe the pass the sales column, gross sales। okay, so still it automatically average it। नेक्स्ट आते हैं यहाँ से एवरेज के बाद आता है सम एवरेज काउंट, काउंट डैक्स, count we have count function, then count country, count country, it will give all line item total, not individually। and also we have many function, we have just wait one by one, we'll consider cover that। then we have count a, count is considering the only you can say number, and count is consider all, and which is called count a। so it will consider true, false and everything। so you can go to the portal and here you have the information about that, so must read it to make sure understand the concept। see this count number rows specific column contain non-blank values। okay, so when function does not find any row, count find return blank।
Then we have unlike count, count is supported boolean data type. Change function is not supported in the not supported in the direct query, so remember that. And talk about the following return. So obviously if passing any value, so make sure that data should be as per the standard. So now talk about the count A. So I just wanted to count the country, so I counted that. Then we have the count X. Same way, if you wanted to pass any, so let count X tax count X, same pass the table name. Then we have the pass the here expression. So expression means whatever average you're looking for. So even you can pass the dynamic measure as well. So average you can also pass it. Don't worry, it will give the same result. Nothing, just is what it will do, it will group your data by the category. That's nothing else. One second. Then we have the average, and now next function is that, okay, count blank. And suppose we have data, I wanted to count blanks only, so we can count the blanks as well. Count blank X, count blank, give the table name, that column name. Result as per your, if you have a blank, then if you don't have it, it will display 0. Next we have the count rows. In a table, you wanted to count rows in the table, so there is a function count rows. You can say count rows, and then table name financial simple. We have 700 rows, so that will going to count it. Next part is that count X icon distinct count. Now suppose we wanted to count distinct, so let me show you the country count DAX. Okay, so we have the we can say 700 count X. When we counted the country, then we have a 7x, but now when I'm using the distinct count, then see what happened. Count count, and then pass the country name, and it will give the different result. Just copy and paste. Distinct count 5. Here I'm getting 700, here I'm getting 5. That is the difference. Okay, let's move to the distinct count blank. Distinct count no blank. Even you can ignore the blank if you need it. Just opposite of that. Max say max mean product, some product. So this is the same function that I have. Okay, so let's start with the distinct count blank. No blank. It will consider non-distinct it with the non-blanks values. Okay, so use DAX, then distinct count no blanks, where we do not have a blank. Okay, so I think I don't have any column right now, so you pick up anyone. It will distinct and give the result.
Okay, so let me show in the table 5. Next we have max. You know that max will give a maximum result, and there's one additional component type which is compare two values together and give the true false answer as well. So like suppose you have a max function. Usually people made mistakes here. Max is give the max value as well as give the comparison of the two values together. Also this option was also there in the Power BI. So if you are aware, then definitely it's going to help you. Talk about the max A. Max A means same thing, return the larger value, and also it has a limitation. Max A is following data type and numbers and dates. Logical true false also consider 1 and 0. Empty cells ignored. And if you wanted to compare text value, use the max function. And this function not supported in RLS. So remember that. If you are watching my channel, please don't forget to subscribe my channel. Like, share, subscribe. Okay. So we have covered the max function. Distinct alert to use the max function. So simple, use the max text, use the max function, and use the you can say then we have max x, we have financial, and then we use the any column like let me use the sales. We wanted to see the maximum price, so we can do that. Max x and max a will be same 350. Okay, so this one we can use. Then we have the product and product x. So product x, product, let's sales column, we can do the product. So let's see what could be the answer, infinity. And then we have the product, then product x. So we need table dot expression. So same thing here, we have product x. So here we have product x and simple financial. Then we have this sales data, sales price, and this. Okay, same, it will pass the infinity as well. Okay, and let's move to the next part, which is yeah, that I have covered everything I cover in that aggregate function, and talk about the, if you looking for the more this kind of videos, follow my channel, and we will create the creating everyday new videos, and we have a playlist. So please follow my playlist, and definitely you'll get a benefit. So thank you so much for watching. See you in next video.